महाराष्ट्र और गुजरात अपने अपने अस्तित्व की शुरुआत इसी दिन से की थी और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने, चूंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है कि हम दोनों राज्य ने कि अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान किया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे विज्ञान हो या फिर सांस्कृतिक या सार्वजनिक सेवा हो। 2 साल में 3 साल में त्रिपुरा में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मतलब अपने गांव से बाहर हूँ। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं मतलब अपने गुजरात में हूँ। तो ये आपका भरतपन है। It is a great pride and joy that we gather today to commemorate the formation days of Gujarat and Maharashtra, the two pillars of our diverse and vibrant nation. This day marks not just the formation of states, but also celebrate their unique identities, heritage, culture, and the countless sacrifices made by their people to shape their collective destiny. What a beautiful sentiment that captures the essence of India's unity in diversity. Your introduction and your comments resonates deeply with the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat, One India, Great India. Celebrating the formation days of Gujarat and Maharashtra is a wonderful way to honor their unique linguistic and historical contributions while reinforcing the idea that nation first unites us all. Gujarat and Maharashtra are the pillars of India's progress. Both states have gifted India iconic personalities who have shaped the nation. From Gujarat, Mahatma Gandhi ji, father of the nation, Sardar Vallabhbhai Patel ji, Iron Man of India, Prime Ministers Morarji Desai ji and Narendra Modi ji, and many legends had their roots in Gujarat. Take from Maharashtra, warrior King Shivaji Maharaj ji, Dr. B.R. Ambedkar ji, and many luminaries in art and science are from Maharashtra. It is heartening to see states celebrating their formation days under central government guidelines, fostering national integration with the task to achieve Vikasit Bharat by 2047.